Lovely. Thank you, guys. Taneea, Priyanshu, Kunal, Rajawat. I'll say Rajawat's family. Yeah. Be here with Synergy Sports, a great on Monday morning actually, and which is quite a busy day for many people. Monday is always busy, but finding time. Thank you again. So for our audience, Priyanshu, you have been playing and badminton so well. We have been looking you and perform at different levels, especially at Orleans. I think that Yes. one of your biggest wins. Um, Last year, we saw you perform so well in Thomas, and even you are so popular in the circuits. Probably you are the, one of the youngest, player making a name at the international forum, which is from India, which is such a great thing to achieve at such a young, tender age, right? So Yes. you look very disciplined. You're so quiet, so humble. So that goes to show that you're such a disciplined guy under the academy. Making sure you're working hard, and that quite much reflects on you as a person as well. Tanya, I think great to have you here as well. We saw you number of times on Instagram. You are amazing in doing your Pilates and keep sharing so much about your different activities on in the movies and all that stuff. I think one of the albums you have been sharing a lot of information about something about mutton paya. I Yeah, it's a short film. Yeah, short film. I was listening to it early this morning, and all the best to you. I think fantastic stuff. Beyond everything else, it speak, right? So that itself is such an achievement, and you're doing so many things which generally we don't get to do. Exceptional. Kunal, we don't know much about you. So today is the day. Mostly, I'm going to ask a lot of things about you. I understand you were a former badminton player as well, but अभी आप उधर पेरेंट्स के साथ सेटल हो अपना कैफे वैफे कर रहे हो, which is such a great thing as well. So you have entrepreneurs, you have players, you have actresses, so many things going on in one family. चल क्या रहा है मतलब ये खाते क्या हो आप लोग घर में बनाते क्या हो ये बताओ. बताओ क्या बनाते हो? मटन घर चिकन. में मैं बताऊं, चिकन मटन से भी ज्यादा घर में बनता है पालक की सब्जी दाल. Simple food, simple living, simple thoughts, huh? बहुत ज्यादा सिंपल फूड, लाइक जीरा राइस वाला खाना, नो मसाला. राइट राइट. और मुंबई में आपको क्या खाना पसंद आता है तनिया? आई मीन इट इज द पाव भाजी छोला भटूरा, और वो ब्रेड का बनता है वो वड़ा वड़ा पाव. पाव. वड़ा पाव. वड़ा पाव, नो आई डोंट लाइक वड़ा पाव हियर. ओके. वो डाइट को वो करते हैं ना ये. Oh yeah. Oh yeah. Sorry, my mistake. I think you will be counting calories in everything and anything you do. Is that correct? I used to, but currently I'm eating most amount of junk in my life. Yeah. No, I think you have to at times. I think you should let go. And sometimes even I feel that if I restrict myself a lot, and then suddenly if there's an outburst, I'll start eating a lot. So I think in moderate Yeah, quantity, everything is fine. It's better to be. I think so that only happened with me because whole COVID 2020, 21, 22, 3 years I was on a strict diet, like strict diet, no sweets, no carbs, nothing. And now I'm suddenly feeding, like I'm eating a lot of junk on a regular basis. Right. So you don't take lessons from Priyanshu? I do. ऐसा नहीं है सर, मैं भी खाता हूँ कभी कभी, पर टूर्नामेंट्स के पहले तब रोक देता हूँ. टूर्नामेंट्स के पहले रोक देते हो, फिर या फिर ट्रेनिंग में भी आपकी स्ट्रिक्ट रूटीन होगी होता है. किस दिन करना है, किस दिन चीट हाँ. नहीं है, वगैरह वगैरह. So who is more disciplined when it comes to eating? Is it like all we can say 100% is Priyanshu? हाँ प्रियांशु, ये हम लोग को तो कुछ भी खा लेते हैं. अनिल मेरा सीन है. And then Kunal, how are things working with you at the cafe? Tell us more about the cafe. I mean, we don't know much about you, and you're not very present on social media as well. हाँ ये तो है, बहुत कम एक्टिव है. ये कैफे कैफे इधर की साइड ऐसा ही है, काम चल रहा है. मतलब क्या डिफरेंट किया है आपने कैफे में? मतलब इज इट लाइक अ टिपिकल कैफे? आई मीन आई हैव नॉट सीन इट. आप थोड़ा बताएं कैफे के बारे में, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा आपका. कैफे के मतलब मैं जैसे कि इधर की साइड पूरा फास्ट फूड और ये सब ही है मैक्सिमम तो इधर. और बीच में जैसे कोविड में मैंने
क्लाउड किचन भी रन करता हूँ अपना, उसके अंदर सिर्फ नॉनवेज ही है, तो वो मैं ही कुक करता हूँ। इधर कैफे के अंदर एक शेफ भी रख रखा है, और मैक्सिमम मैं जैसे चाइनीज और ये सब तो मैं थोड़ा बहुत हैंडल करता हूँ। Wow, very nice. So you are so good at cooking yourself. Yes, हाँ जी। शादी नहीं हुई आपकी अभी तक? नहीं, He's a सोच रहे हैं wonderful करवा लें। cook, especially biryani. See, yeah. So Kunal, and this was something your passion, or you thought something I should do on my own, entrepreneur बनना है, कुछ करना है लाइफ में? ऐसा भी बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं, ये समझो कि शो के खिलाने का, Right. Right. इसलिए कर रहे हैं। Right. And how is it going overall? You're happy with how things are, and overall support, because it's a nice place, nice location. हाँ, Plus your parents are there. वो इधर की साइड मतलब ऊपर घर, नीचे कैफे, आगे पापा का शॉप, तो सब एक ही जगह। So it's like a dream come true in that sense, right? Very few people will have like घर भी है और नीचे कैफे भी चल रहा है. It's so relaxed, you know. kind of नींद आई तो ऊपर जाकर सोकर आ गए. And what's the type of food you normally? Is it like, as you said, non-veg, but is it? लाइक कैफे में सिर्फ वेज, क्योंकि इधर जैन और इनका है ना, तो इस कारण सिर्फ वेजिटेरियन नहीं है। ऐसे में क्लाउड किचन जो रन करता हूँ उसके अंदर सिर्फ नॉन वेज। Right. And if I may ask, what's the name of your cafe? कैफे ब्लीज। Cafe Bliss. Any websites वगैरह कुछ तो होगा आपके पास? अभी तो इंस्टाग्राम पे ही पेज है। Sure. No, which is good, because Instagram is most sellable these days. Or कुछ anything you are planning around community events and all that stuff, gathering people, social gathering and all that stuff as well? हाँ, कुछ ना कुछ जैसे यहाँ पे इवेंट होते हैं तो फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत करवाते रहते हैं या कुछ, Right. वो चलता ही रहता है। Right. So sometime I think you should definitely try your food. I cannot because I'm in Singapore, but whenever in India we get a chance, of course, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाना चाहिए हमें तो. अरे बिल्कुल। अपने को डिस्काउंट है। अरे आप ही बनाओगे तब तो डिस्काउंट ही है. हाँ, Lovely. I think, and Priyanshu, you, I mean, I did mention about some of your. I think 2023 has been what kind of a breakthrough year for you. We are talking हाँ सर, that the fag end of 23 is just a nice time to kind of wind up your season. Reaching into quarterfinals. Orleans definitely we spoke to. Australian Open you did so well. Are you looking forward to Korean Masters now? नो सर, जापान एंड चाइना। Japan and China. All right. Yeah. So comfortably, you can conclude that 2023 has been that year which is like most fascinating for you in terms of your successes. हाँ सर, बोल तो सकते हैं, पर थोड़ा बीच में जो इंजरी और उसका चांसेस है वो थोड़ा ज्यादा थे, तो उस वजह से बहुत टूर्नामेंट मिस कर दिए मैंने अपनी गलती से। तो बस अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जापान, चाइना और फिर सैयद मोदी भी है इंडिया में, तो उसके लिए अच्छे से खेल सकूं। And Syed Modi is such a big event in India. हाँ, Huge, massive. And you get to play with so many national players. कहाँ से and हाँ। to compete with them. So competing in national games is difficult, or competing in international is difficult? What do you? नेशनल गेम्स थोड़ा मतलब ठीक है, पर बाहर के प्लेयर्स के साथ खेलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इंडिया में खेल खेल के आदत हो जाता है प्लेयर्स का। पर इंटरनेशनल लेवल पे एक बार अगर जिस प्लेयर से खेला है वो नेक्स्ट टाइम आपका गेम पूरा रीड करके आता है कि क्या खेलना है इसके साथ और क्या करना है। और इंडिया में इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है कि अगर हम हार गए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कैसे भी फिर से खेलना है। तो बाहर के प्लेयर्स पूरा प्रिपेयर करके आते हैं कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे ये वीक है और ये सब। So you were contesting in Denmark, China, all that stuff, and you were playing against very high ranked players. यस। So did you do any kind of studies over? आपने भी उनका स्टडी किया कुछ कि कैसे compete करना है, क्या करना है? मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ऐसा मैच देखे जाना कि मैं मैच पूरा उसका एनालाइज करूँ और खेलूँ, मुझसे नहीं होता है। पर मेरे कोचेस मुझे बिठा के पूरा समझाते हैं कि इसके साथ ऐसे खेलना है, या तो पूरे मेरे कोचेस ही पूरा उनका मैच देखेंगे और मुझे एक एक उनका वीकनेस बताएंगे मैच के बीच में कि वो क्या खेल रहे हैं, और मैच के 1 घंटे पहले मुझसे बात करेंगे कि इसके साथ ये करना है और ऐसे ये प्लेयर के साथ ऐसे खेलना है। तो पर मुझे ऐसा देखना पसंद नहीं है किसी का मैच की
ऐसा मैं एनालाइज करूँ, पर वो मुझे करना चाहिए अब से स्टार्ट, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अभी के टाइम पे कि मैं दूसरे का मैच एनालाइज करूँ और वो देख के सीखूं। स्पेशली अभी डेटा पॉइंट्स काफी आ गए हैं, वीडियो सारे अवेलेबल होते हैं, and technical analysis काफी आ गया, what's your strength, हाँ what's your weak, all that kind of stuff. And being singles player, how do you find it, like compared, you know, seeing yourself singles covering the entire court is not easy compared to, you know, some of the other ones. Nowadays doubles का बहुत चल रहा है, especially after Savik Chirag and all that. हाँ So how do you see yourself? Do you think you're in the right zone and the right spot? हाँ, मतलब मेरे लिए तो सिंगल्स ही बहुत मेन था, क्योंकि मैं शुरू से ही डबल्स बहुत कम खेला हूँ और मुझे सिंगल्स ही बहुत पसंद है। और फिर गोपी सर ने भी एक बार मुझे ऐसा डिसाइड कर दिया था कि अब सिंगल्स प्लेयर ही बनना है, तो मैंने तब से ही सोच के रखा है कि अब मैं कुछ भी होगा पर सिंगल्स ही खेलूंगा हमेशा। Right. And you're coaching with who? You're coaching with Arun or गुरु साइदत यादव, गुरु साइदत एंड गोपी सर। Gopi sir? Fantastic guy, right? Gopi sir, such a pleasure to या lucky you know, training under him or coaching under him, right? And Japan Masters में, so you're trying to prepare yourself, कुछ अलग thought process, same strategy, same planning के साथ हुआ? सेम, अभी तो पूरा सेम ही है, पर वहां जाके पता चलेगा कि क्या कंडीशन है कोच का और उसका, फिर उस बेसिस पे कोचेस के साथ बात करूंगा कि क्या करना है। और बाकी अभी तो प्रैक्टिस में सब सेम ही चल रहा है। Lovely. We were also looking at your profile on Instagram. It's very nice, frankly. And Tanya as well, your profile Thanks. kind of. मेरा अकाउंट तानिया दी हैंडल कर लिया है। And So next time whoever will message him, guys, Yeah, I'm the person. and it's so good because at such a young age you have made it to that level, and your pictures I saw, your, you know, with Prime Minister Modi, and Yes. then you have Naveen Patnaik ji, who's a chief minister, and then Shivraj Singh Chauhan ji, which is Madhya Pradesh chief minister. मतलब chief ministers को आप पकड़ने का ठान के रखे हो, मतलब मिलना ही मिलना है जहाँ जाएंगे। हाँ उड़ीसा ओपन में तो आप पटनायक जी के यहाँ चले गए, फिर इधर आप चौहान जी से मिलने चले गए। How is it like at this age catching up with such people? They are big people. In fact, they are very influential people. To even reach out to them and they felicitating you with and, you know, Prime Minister Modi जी से आपने मिले, कैसा लगा? I mean, what was the thought process? What did he speak to you? बहुत अच्छा लगा था, मतलब उनसे मिलके, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगा पहले तो, पर वो पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने बुलाया हम लोगों को सबको कि आप लोग आओ मेरे साथ लंच करना। तो बहुत बड़ी चीज थी हम सबके लिए, मतलब पूरा टीम था जो हमारा, उन सबके लिए भी बहुत बड़ा था। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतने अच्छे से बात करेंगे, ऐसा इतना टाइम देंगे प्लेयर्स को। तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं और सबसे ऐसा टाइम लेके पूरा हर किसी से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या तुमको ऐसा चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी जो प्रेसिडेंट हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी, असम के चीफ मिनिस्टर, सच अ फैंटास्टिक फैसिलिटी व्हिच इज ओपनड अप इन असम। या did you visit that facility? हाँ, इनॉग्रेशन के लिए हम लोगों को बुलाया था, जो हमारा थॉमस कप टीम था, Right. तो हम लोग गए थे सब। Nice. So I mean, yeah, great things happening especially in badminton, and especially with Satvik and Chirag regaining that number one tag. या You know, and so many new players coming up, you know, like Tanisha doing exceedingly well, and then Ashwini doing so well, Panda sisters really doing so well, you know, so it opens up so many possibilities also, no? मतलब कि everyone is looking and having dreams in their eyes. It's amazing. Have you seen things changing in the last 4-5 years, Priyanshu? हाँ सर, बहुत, मतलब अभी इंडिया में तो बैडमिंटन बहुत ऊपर आ गया, क्योंकि पहले लोग ऐसा देखना नहीं चाहते थे बैडमिंटन को, पर अभी सब प्लेयर्स बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम खिलाना चाहते हैं। तो बहुत, ये 4-5 साल में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई बैडमिंटन के लिए, क्योंकि उनको, मतलब हर प्लेयर को अब इक्वल ऐसा फेम मिल रहा है कि
जो भी अच्छा खेल रहा है तो हर जगह से गवर्नमेंट और उनका वो सब भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारा जो एसोसिएशन है, बैडमिंटन एसोसिएशन, वो भी बहुत अच्छे से सब प्लेयर्स को इक्वली ट्रीट कर रहा है। फिर जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Right. तो अभी और ऐसे ही चलता रहेगा कि ओलंपिक्स गेम में भी बैडमिंटन से तो प्लेयर्स जाएंगे, तो बस ऐसे ही बढ़ा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि और लोग ऐसा खेलते रहे बैडमिंटन को, और क्रिकेट जितना फेम हम लोगों को भी मिलने लग जाए। वो मिल रहा है, ऑफ कोर्स। Talking in the times of World Cup, I'm sure you guys must be following that. Cricket अपने अलग लीग में हाँ। है. I think India is shining at the moment from all corners, be it economic front, be it Asian Games में आप देख लो, athletics में they have done so well. Games में they have done like more medals than normal ones. Badminton में like we have reached #1 title. So I mean, I think अब World Cup ही जितना बचा है, बाकी तो pretty much निकाल ही रहे हैं. But yeah, fantastic. How do you see this competition coming up? Healthy? और कहीं ऐसा लगता है कि मतलब अभी यहाँ पे बढ़ गया है, तो टाइगर गया है, मतलब you have to really perform top of your game and be ahead of everybody. तो वो प्रेशर भी फील होता है? नहीं सर, डर तो नहीं लगता है बिल्कुल भी प्रेशर और उसका भी। बस ऐसा सोचता हूँ कि अपना 100% दूं कोर्ट पे जाके, और ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि कुछ हो जाए या हार जाऊंगा, क्योंकि हारे तो सब हैं, पर अगर डर के खेला तो फायदा क्या है कि अगर हार गया मैं और ऐसा होगा। तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं कोर्ट में जाऊं और अपना 100% दूं, या मैं हारूं या जीतूं, बस अपना 100% दे के बाहर निकलो और मुझे खुशी होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा गेम खेला है। तो मैं प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेता हूँ कोर्ट में जाने के टाइम पे। Right. I mean, more I talk to you, more I see that you are so fine-tuned now. You're amazing. You're talking like professional, so thorough. Badminton shuttler. Very calm, peace of mind. मुझे पता है क्या करना है. Trust the process. Doing it again and again and again and again. Forget about everything else. So spot on. And Tania, you are motivating him. How is it like? I keep on doing that, but I think so he motivates me more. Really? Look, I mean, yeah, there's nothing beyond saying that you guys motivate pretty much. I mean, the younger generation, Priyanshu, also looks at you. But and I'm sure you guys must be talking among them. I mean, yourself, isn't it? Match के पहले Priyanshu call करता है, and you guys must be talking to him before the event or after the event. कैसा चला भाई, क्या हुआ, किया कैसे किया, क्यों किया? How is the conversation like? मैच के पहले कैसा होता है? Environment कैसा होता है? मैं घर बात नहीं करता हूँ मैच के पहले मैच के किसी से बाद भी। बात होती है इससे। और वो भी आई थिंक सो मम्मी पापा से तो फाइनल के हाँ। बाद ही होती है इधर, लाइक उसके पूरा प्रोसेस में मम्मी पापा से नेवर इन कांटेक्ट। अच्छा, nice. Okay. Is that intentional, Priyansh, कि ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए इसलिए, या फिर you just want to stay out मुझे of टेंशन emotional? नहीं रहता है, घर वालों को ज्यादा टेंशन पापा रहता को टेंशन रहता है मम्मी पापा को बहुत ज्यादा रहता है, मतलब मम्मा उससे अगर इफ आई एम विद हिम ड्यूरिंग हिज टूर्नामेंट्स तो मम्मी मुझे भी कॉल नहीं करेगी फॉर दोज 3 4 5 days कि जब भी जो भी हो, इधर ही विन और इधर ही लूज, देन ओनली कैन मेक हर अ कॉल। And typically they will all be glued to the television watching you play, and amazing नो thing, right? I mean, Kunal, आपका कैफे चलता है उस दिन, कैफे बंद कर देते हो? नहीं चलता है, हम लोग सारे के सारे देखते हैं, मतलब हमारा जितना भी ग्रुप है ना, तो सब जने इसका मैच ही चलता रहता है और इसका ही मैच देखे, इधर अलग ही माहौल बना लेते हैं कि हाँ जीतेगा I am sure. और अभी वर्ल्ड कप के दौरान कैसा मैच है, मतलब माहौल रहता है उधर इंडिया के मैच के टाइम इंडिया ज्यादा। में? I mean, अभी तो कैफेज वगैरह है फुल. Even in Singapore, you go to some of the Indian cafes, restaurants, all that, so bars, and we'll put on big television. It's all full jam packed. ये तो हमारे बॉलर्स की कुछ न भी मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 20-25 ओवर से मैच फिनिश कर देते हैं, इनका दुकान बंद हो जाता है. Everybody leaves. Otherwise they will want 3 hours तो कम से चले, 3 घंटे लोग बैठेंगे. They will order something, they will eat something, they'll drink something. But yeah, I mean, I really lovely seeing how you guys come together and there is thought process. I mean, Priyanshu, as you mentioned, मैच के बाद ही आप सबसे बात कर रहे हो.
And how is the discussion like even after the match? Complaints होते हैं मतलब तानिया you will complaining क्या क्या किया कैसे किया क्यों किया? I think you are okay भाई. You did nahi, the nahi. If he loses, then the only question is, are you okay? Are you feeling okay? You gave your 100%. Are you okay? Bas, that's it. Because the main concern is कि अगर if he is winning, of course, तब तो एक अलग ही चीज हो रही है. Then we all are very happy and we are discussing कि हो गया. But the time he loses, then it's always like कि प्रियांशु ठीक है ना, ठीक है, तूने 100% दिया ना, अभी हो गया. अभी let's move on to the next one. Absolutely. Absolutely. I think in sports, one thing is very clear, and you guys know better than me. And I'm following this, talking to a lot of players. They say there's no winner or loser. Even when you lose, you still get to. There's always a takeaway. You still get to learn a lot of things, and then you come back again in the next match, adding those many things, those many gaps as your skill. So you top up yourself after every match with additions, and then go back and try and make sure that you win. So yeah, I mean. सारे मैचेस तो कोई नहीं जीतता but Indian team भी lose करती है they lose a lot of games but they know how to come back and that's what is the sportsman spirit all about. So आप लोगों ने तीनों कभी बैडमिंटन खेला साथ में? नहीं नहीं Not कभी me. नहीं? I'm not a good player. हम दोनों खेले I'm Kalan. थोड़ा थोड़ा खेले. कुणाल आप तो पहले खेले थे हाँ बैडमिंटन. अच्छा फिर थोड़ा क्यों मतलब आपने बोला कि प्रियांशु तुम ही देखो बस मैं कैफे देखा हूँ या फिर हाँ बहुत टाइम हो गया छोड़े भी. 10th में छोड़ा था मैंने. हाँ. अच्छा 10th से भी पहले एक्चुअली 9th में छोड़ दिया था 9th तुमने. में. So how did this fever starts in you? I mean, I'll go back number of years back. And Priyanshu, you're still so young. Maybe one of you just tell me how did it all start in the family? That I have this vision, dream, badminton dream. You say, नहीं मुझे entrepreneur बनना है, कुछ अपना करना है. बताओ. How did it all start? खाना दी बताओ. Okay, मैं सबके बिहार में बताती हूँ. Good. So बैडमिंटन में हमारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है नहीं. एंड कुणाल को बहुत ज्यादा व्हेन ही वाज वेरी यंग उसको निमोनिया बहुत मेजर इशू था. तो डॉक्टर ने बोला था किसी स्पोर्ट्स में डालो इसे. और देन कुणाल स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन. तो और प्रियांशु वाज आल्सो वेरी यंग. तो प्रियांशु को पापा लेके जाते थे कुणाल को पिक और ड्रॉप करने के लिए. So in that process, like no one ever dreamt कि इस चीज को professionally लिया जाएगा or anything as such because we had no idea like how to go ahead with it. And then one fine day, like it's a very silly story, but one fine day, Priyanshu was sitting with Papa और ये लोग खेल रहे थे like Kunal and everyone अब stadium में अपना जो है. And then Priyanshu was like, oh, ये इन्होंने ना गलत smash मारा है or something about it he commented. So my father was like, oh, if you know it so well, why don't you try it? And then he actually like tried it. And that time our coach, like his coach was Sudhir sir. So then Sudhir sir was like, from tomorrow you're joining badminton. And then that's how it started for both of them. Then Gopi sir, then he performed really well within 6 to 7 months only. He won state. Priyanshu, right? Okay. Yeah, he won state. And then उस ड्यूरेशन में साइना का रिजल्ट बहुत अच्छा था and Gopi sir was searching for new students. So both of them gave the trial and that's how they got into Gwalior Academy. Okay. And like that's the journey from there now. Whatever you are seeing, it all started from there. Right. Since then, there is no stopping. Right. Yeah. And that was when years back. Tanya? It's Priyanshu was 7 years. 2011. 2011, yeah. 20. So it's 11. My Yeah. God, it's like 11-12 साल मिल गए हैं. हाँ. Time flies. No, really. And we Tanya, had like literally no idea about it, like because we had no idea how to, even they had no idea how to become a professional player. And I remember when Priyanshu actually gave the trials for Gwalior Academy, इसको 103 fever था and my mother gave him like my mother was not there of course. I think so on call इसको बोला गया था कि you take the paracetamol and 103 fever में he gave the trial and he got selected. that was pure skill and pure talent on display, isn't it? So Tanya,
tell us about yourself now. I mean, on from moving badminton to acting, and then I'll come to entrepreneur. थोड़ा तो हमने बात किया कुणाल, but ये acting कैसे आपने start? What was your cooking in your mind कि अभी acting जाना है? कि Priyanshu was doing badminton, Kunal playing badminton, ended up being on entrepreneur. आपने सोचा नहीं कि कुणाल के साथ आ जाएं, कैसे को और थोड़ा बड़ा करें, expand करें? इधर You had your मैनेजर own I मेरी really तानिया want थी to do it. सबको हैंडल करने वाले तानिया थी मेन. So when it comes to acting, so like even this is a very filmy story. So when I was 2.5 years old, from that time I always used to tell my parents, especially my mother, that I'm gonna become an actor one day in my life. And then again, like हम लोग धार से हैं, सब लोग and no acting background or no industry का background. So my parents used to laugh at me, and they always took it as a joke actually. And then मेरी मम्मा को ऐसा, and I was good in studies also. तो मेरी मम्मा को ऐसा था that you will become IAS in your life. And I was like, no, I want to be an actor. And from that young age only, I was like, no, I'll be an actor. I had no idea how to do it, to be very honest. और मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जाऊंगी or anything as such. Then वो मजाक में I gave some auditions from Indore only. And I applied to an acting institute and I got selected, and then I came to Mumbai. But matlab us time pe I was in 12th standard, so my mother she was like, okay, if you want to go, you're supposed to get this much percentage in your 12th board exam. If you'll get it, you can go. Okay. So then I studied really hard and I scored I scored around 86-87%. So then my mother gave me the permission, okay, like you can go and pursue whatever you want. And then we are very lucky in that terms, like our parents are very supportive, very supportive. So No, yeah, that's how it all started. Yeah, I can definitely sense it. In fact, क्योंकि at that age और इंडिया में small towns में actually movies वगैरह टीवी देखने के लिए ठीक है. The moment the kids will say कि अभी मुझे actor बनना है, then there's always a factor wherein they get worried कि भी आगे क्या, because they know that struggle everybody goes through and all that stuff. So unless until you guys are mentally very strong, you exactly know what you're doing is right and this is what I want to do in my life. And for parents to spot that on, I trust my kid, they can do it. क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं है. I mean, in today's generation they are like उंगली पकड़ ही चलते हैं. And everybody to make a decision is a big one. For all three of you, I think they are definitely a great support system for you guys, isn't it? I mean, and Tanya, I mean, you have been growing from strength to strength. What's coming up next for you? Next, 2 of my series are gonna get released, I think so next year. So yeah, I'm like waiting for that, and then there are some projects I'll start shooting by December end. So those will be the things which will come. And coming in front of the camera, you must be very comfortable, enjoying the moment, enjoying the glow. I love that. I love camera. And then Kunal, Priyanshu, भी मौका मिला आपको सेट पे जाने का? मैं गया हूँ एक बार बस, अच्छा, हैदराबाद में एक बार वो. अच्छा. And Kunal, you have been there as well? नहीं. इनको भी 1-2 ऐड मिले यार, कुणाल को भी इनके कैफे की भी प्रमोशन हो जाएगी. I really want him to act. And then Priyanshu is anyway, is known playing badminton. Is anyway a star, isn't it? So you guys have all those qualities coming together itself. You'll make any brand look bigger. So yeah, I mean, you guys should definitely think about it. Maybe starting something together, or come together to do an idea and take it forward in a big way, because you all have that visibility, brand, skills, talents, whatever people need these days. And coming back to you, Priyanshu, I mean, you want to continue now badminton for X number of years? Yes sir. उसके बाद देखेंगे सर, पर अभी जो अभी है वो टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ मैं, तो अभी तो बस बैडमिंटन. But there is no pressure. Yeah, I'm sure there is no pressure from anybody
and even we want you to continue playing. But as individuals, normally as individuals, you will also have a mind of your own, and you'll have a career plan, you'll have a life plan. Ki, until how many years you want to play, and then after you play, what would be your ideal service, whether you want to be a coach or you want to have your own academy, etc., etc. कुछ plan में है ऐसा कुछ long? अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया सर ऐसा, Okay. पर देखेंगे आगे जाके क्या होता है और कैसा सब मैं करता हूँ, कितना बड़ा प्लेयर बनता हूँ। तो पर मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक गोल्ड लाऊं, एक मतलब इंडिया के लिए फर्स्ट, जो कोई नहीं लाया है अभी तक। तो उसके बाद देखेंगे कि मैं क्या करना चाहूंगी। Anything else, whatever happens after that will always be blessings. So no, I mean definitely आपके मुंह में घी शक्कर है ओलंपिक्स थैंक्स सर। और लेकर के आए, और हम लोग उसी दिन वेट करेंगे। उसके बाद तो कुणाल जी पूरे सिटी में फ्री कैफे से खाना खाई होगा। करेक्ट है कुणाल, राइट? हाँ जी। No, I mean a few things I also wanted to you guys. I mean your family, as you mentioned, your parents are they coming from the same entrepreneurship background, or they come from kind of a civil servant background? कुछ अगर बताएं हमें No, के बारे में। they're entrepreneurs. Like my father is an entrepreneur. Okay. And in what kind of business normally? So we do have like a very small business. It's he started with Xerox, but then all this printing and everything is into. Right. So that mindset, which is normally entrepreneurs are very very tough, have a very tough mindset. Whatever comes, they will face it. Whatever comes, I'm gonna take it. I'm not gonna budge so easy. So I think you guys have got that strong mindset from parents, considering that they have been entrepreneurs themselves. They have seen so many things in life. और हमारा बहुत thick skin होता है entrepreneurs, they have a very thick skin. Nothing goes down very easy. You will fight, make sure that you cut through and you make the mark one day. So I think Yeah, that like is that very evident. never giving up spirit is because of I think so my grandfather and my father and even my mother, because Right. they always taught us to not give up in your life, whatever the situation may be. You're always supposed to like get up and then retry it, and gonna achieve it no matter what. Nice. अब प्रियांशु, आपका कोई एक मेमोरेबल मोमेंट बताएं आप अपने बैडमिंटन करियर में से। One moment you will definitely want to remember for life. That could be Orleans or something else, or one you want to forget for life. That I don't want to even recall those moments. मतलब मैं थॉमस कप का बोलूंगा कि मैं हमेशा याद रखना चाहूंगा, Okay. क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया का थॉमस कप था और मुझे वो चांस मिला कि मैंने वो ट्रॉफी लिफ्ट किया। तो मैं अपने सब टीममेट से भी थैंक यू बोलूंगा कि वो उन्होंने मुझे ऐसा चांस दिया। तो वो मैं कभी नहीं भूलना चाह रहा हूँ, और आगे भी ऐसा हो कि हम लोग फिर से जीते, सेम चीज और सेम टीम हो वही। तो बस वो चीज मैं कभी नहीं भूलना चाहता हूँ। Definitely. And how is the one army with a lot of your other colleagues? You practice with so many big stars. 5-6 साल पहले उतने बड़े स्टार नहीं थे, अभी तो बड़े बड़े स्टार बन गए। हाँ, तो अभी के साथ ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहते हो, पार्टिसिपेट करते हो, ट्रेनिंग करते हो। How is the atmosphere like? Is it like you feel good? You feel at ease? हाँ बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो सबके साथ, और फैमिली जैसे ही हैं वो लोग भी, मतलब सब भाई जैसे ट्रीट करते हैं मुझे कि ये छोटा भाई है करके। तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, मतलब ऐसे वो लोग मुझे बता देते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और कैसे खेलना है करके। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता है कि इतने बड़े लोगों के साथ वो खेल रहा है और वो सब उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये करना है अगर वो लेवल पे जाना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं, ऐसा छोटे भाई जैसा। And do you get to play with them? I'm sure during training you guys have, हाँ, और आपका अलग सेट चलता है। नहीं मैं उन लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब मेरा अलग नहीं, उन लोगों के साथ ही पूरा जो सेशन होता है। So what's your overall of where we are in singles? So singles में
we have Prannoy now suddenly is like a volcano. He's erupting. And he's like getting medals after medals, and we have Shrikant doing quite well as well. Of course, recently he has not had that great success, but Prannoy has stood out. At this age. What is your reading of where we are and कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, मतलब अभी सिंगल्स और ऊपर भी जाएगा, क्योंकि इंडिया के टॉप 100 में ही कम से कम 10 से 12 लोग हैं और टॉप 50 में 6 लोग हैं, क्योंकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि 6 या 7 लोग टॉप 50 में हैं। तो और भी चांसेस है कि सब साथ में ही टॉप 30 ब्रेक कर दें और टॉप 20 में ही 6 या 7 लोग हो, क्योंकि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इतना ज्यादा प्लेयर्स उनके एक ही 50 में है। तो और भी बहुत प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से अगर करेंगे तो सब सेम साथ में ही लेवल हो जाएगा सबका। Right. No, true. I mean, the main threat is mostly from Indonesia. They have so many, shuttlers out there. Amazing, insane. The kind of smashes they make. They really tear apart the opposition. ऐसा लगता है वो moment they are here, एक दो से चला गया तो लगता है कि they'll take the game away. But what is your also reading about some of the other players who have suddenly come out in the fray? Things like some of the players like I earlier mentioned, like Taneesha and Ashwini, they are doing really great, and some of them we follow are mostly women players. Even the Panda sisters, Ruta Parna and Sweta Parna, they have been touring, have been around like a lot, and that goes to show that there's a lot of stuff still happening at the ground level, the grassroots level, and they slowly will come up and take a mark, up the ladders. And your ranking itself is 28 at the moment, is that correct, Priyanshu? अभी 30 है, पर हाँ 28 था, यहीं पे था, right? And which is great because to be among the top 30 and top 15 across the world is by no small, right? And especially among those players, like the guys in Europe are so super talented, the guys in Indonesia are super talented, Denmark, amazing talent, and then Indians finding a way over there, kitne sare wo bhi top 50 mein. You being one of them is a joy, frankly. I think keep doing well. We want you to be top 10 soon, and then थैंक यू सर। एक बार top 10 में गए उसके very easily. I think another 3-4 years that's gonna happen. That's my reading. I remember talking to Chirag once, which was during the COVID times, and that time I think Chirag and Satvik were around 10 or 11, that kind of ranking that, and now they climbed to the ladder. Like, the game is different level altogether. So I don't know कि भाई क्या खाया उन्होंने 2-3 साल में क्या किया, but it's like they're like rockets, man. I mean, so I think you're in another 2-3 years we're gonna that's you there. That's definitely game. Whatever your we have seen, I think we can sense it, and kind of dedication you are putting in. आप लोग का क्या कहना है, तानिया, कुणाल? You are very quiet. What is your observation, like generally speaking? Generally, like whatever you're saying, I agree to it because not because he's my brother, but मैंने उसका जितना भी game देखा है, it's my dream कि हाँ मतलब he has the potential that he can be in top 10 players of the world. So right. And come back to some of the fun stuff. Priyanshu, Kunal, have you seen any on screen any movies of Tanya or series of पूरा end same? नहीं, मैं कभी नहीं देखता, मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने देखी है, लाओ शुक्ला। अच्छा, देखिए अभी कोई एक डायलॉग बताओ। Tanya is gonna test you guys whether you remember the dialogues. they don't watch my films only. How does he remember? तो याद भी नहीं होगा यार डायलॉग, कौन सा तान्या देखा? अभी लाओ शुक्ला। तुमने लव एंड शिला देखी है, तुम्हें लास्ट का डायलॉग तो याद होना चाहिए। Because it's like एक बात पता है आपको, हमें ना अक्षय कुमार बहुत पसंद है।
अभी मटन पाया देखना है ना, अभी देखेंगे तो उसके डायलॉग। अरे नहीं, तुम नहीं देख पाओगे। इनका देखा मटन पाया? भाई गाइस, टाइम मिले तो आप जरूर देखो, और अगली बार टेस्ट होगा तो उसमें पास हो जाए तो आप लोग। तनिषा इज फेल्ड। They don't watch only. They can't मैं even नहीं take देखता my बिल्कुल भी, auditions. वो हो जाता मुझे है बहुत हंसी इसको। आती है। हाँ, नाइस। शायद सिर्फ मम्मी देखते हैं घर में, मेरा जितना भी कंटेंट होता है ना, only my mother अच्छा, watches it. That's it. No one else. nice, lovely. And Tanya, you try to make some trips around with Priyanshu or Kunal, different locations पे जहाँ भी मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, कभी मौका मिला आपको जाने का साथ में? हाँ, I do अच्छा, visit. मतलब right. साथ में लास्ट आई थिंक तो मैं प्रियांशु के साथ हांगकांग घूमने गई थी। अच्छा, okay, nice. And Kunal, have you been as well in the trips? नहीं अभी तक तो नहीं। इधर कैफे के अंदर ही इतना बिजी हो जाता है कि कहीं जाना ही नहीं होता। Right. कभी प्लान बनाओ, the Singapore Open, I'm sure Priyanshu you must be coming. हाँ सर, कभी प्लान बनाओ सिंगापुर। I mean, the moment you touch down, anyway, I'll drop a text on Instagram. Come down, Tanya, you as well. Kunal, अगर टाइम मिलता है तो we'll host you here. Surely, It's a surely, sir. huge Indian community. They love talking to you guys. Most of them somehow know you guys because badminton is now a big sport. But they will love to know you more क्योंकि यहाँ पे बहुत followers हैं. And very few of them can make it to the stadium to watch the matches. Very few of them. It's very tiny numbers, but the larger crowd where I stay in, number of Indians are huge. So in the past we have got an opportunity to host some of the players, and the amount of people came in was insane. पूरे clubhouse है हमारा, पूरा clubhouse was like jam packed. And then we had a session, meet and greet session kind of. So it's nice fun, and we hosted them for dinner and all that stuff. So whenever you guys are in Singapore, feel yourself at home. यस सर, And we should definitely meet up. And Surely. it's not far, right? It's already towards the end of the year. I think Singapore Open happens sometime towards the mid of next year. या Yeah. So definitely make a plan. I think feel yourself at home whenever you touch down. All right. Surely. अब मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, but मैं आपसे कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करना। हम लोग वन बाय वन कर सकते हैं या फिर जो भी पहले आंसर करे, whatever you think, whoever has the first. We'll do this. Yeah. Okay, good. So let me just open up. Good. So maybe Kunal, you tell me what is Priyanshu's best innings you have ever watched? मोमोज कॉफी है। Which match? मैच बताना पड़ेगा आपको। मैच में बताना पड़ेगा। नहीं अभी लक्ष्य वाला मैच। लक्ष्य हाँ, सेन Yeah, के yeah. साथ। लक्ष्य के साथ जो मैच था, Okay, that's it good. was, you both were so close. Yeah, very close actually that game was. Yeah. Okay, now Priyanshu, this question is for you. Tanya's one of the Tanya's movie you like most, favorite movie. You have not watched, but अभी discussion में लोगों से सुना होगा, parents से सुना होगा, थोड़ा सा देखा भी होगा maybe. मतलब इनका फर्स्ट मूवी जो था लव एंड शुक्ला, वो ही बेस्ट था क्योंकि बहुत अवार्ड्स मिले थे वो मूवी को, तो वही मेरे लिए भी बेस्ट ही है। Yeah. Kunal, But for वो you? तुमने देखी भी है, I guess. नहीं, Nice. थोड़ा नहीं देखी है। Kunal, for you, is it the same movie? हाँ, लव एंड शुक्ला उसके सिवा देखी नहीं इनकी। फिर कुछ Tanya, you have a job to do. Get these guys to watch your movies. Yeah. Then make fun. I don't want them to watch only. मूवी देखने था इनको देख के हंसेंगे हम लोग, तो वो थोड़ा जाएगा। They don't focus on the film. They're like, अरे आपने ये किया, अरे आपने ऐसा मुंह बनाया. That is good, right? I mean, if you guys get together, it's going to be a lot more fun. Okay, next question. Tanya, what is Kunal's name on your handphone? Kunal Pagal.
Okay, and Priyanshu's name on your handphone. Priyanshu, world number one. Wow, very nice. Why one is a pagal and one you made a world number one? Because I really want him to become world number one. And Kunal, because he keeps on cracking stupid jokes so many times, I'm like, pagal hai re tu, pagal hai re tu karke. So I saved it like that. So you want him to stay pagal, he's stay as cute as possible, as funny as possible. Yes, he's like the cutest. All my friends, Yeah. जितने भी इससे मिले हुए हैं, even जो नहीं मिला हुआ है, they'll keep on telling me, oh, Kunal is such a sweetheart. He's the sweetest person in your family. He's such a good-looking person. So, like, I really want him to stay like that because everyone is always like, Kunal is the best. Kunal, you have a job to do, man. And Kunal, what is how do you save Tanya's number on your phone? उनका नाम तान्या दी 2 हार्ट और पिंक का प्रियांशु का पिंक का. That's quite fun. Okay, I'll move on to the next one. आप लोगों का चाइल्डहुड नेम्स बताओ. अभी तक चाइल्डहुड. Mine is, हाँ, please. I had a lot of childhood names. Like, mine is Tani, Tinna, Tinde, and Gudiya. Most favorite Kunal out of those 4-5, your most favorite, or which you normally call every day, by her name. तान्या दी को ना किसको? हाँ, मुझे तान्या दी यही बोलते और क्या बोलेंगे इनको. My mother calls me Tani. हाँ. But even she adds D. So it's like Tani D. Tani Di, nice. And Priyanshu, you? तानिया दीदी. Tanya Didi, okay. पूरा और कोई भी निकनेम नहीं यूज करते हो आप? नहीं, मैं किसी के लिए भी नहीं करता हूँ. दोनों को नाम से ही बस. Okay, good. I'll move on. Okay, so each of you will tell a favorite habit of the other person. All right. So Priyanshu, maybe you tell a favorite habit of Kunal and Tanya. कुणाल भैया का मतलब उनको खाना बनाना बहुत पसंद है, तो खाना और पार्टी करना. Party gun. You're a party man. और तानिया दी के लिए उनको घूमना बहुत पसंद है, तो घूमने के लिए ज्यादा है, और पार्टी वो करते नहीं है. तो घूमने का और शॉपिंग. Shopping तो I think वो default है. But workouts you do amazing हाँ, workouts. वर्कआउट तो करते हैं, Right. करना पड़ता है, तो But it's not a हैबिट में नहीं डाल सकते. I love doing workouts. all right. And Tanya, you tell us a favorite habit of Priyanshu and Kunal. Like, what I can actually tell you what I love about them. So Kunal ka, there's a nature wise, like Kunal ka favorite habit is कि वो आपको पूरा annoy कर देगा, and then he'll come and he'll smile and be like, अरे बहनू क्या हो गया? Like, make it go like this. Okay. And with Priyanshu, I really love, like, he's very disciplined and the way he treats other people. So like even Kunal is very good with it, but Priyanshu and Kunal, both of them, there's a common thing which I love about them, and it's the best habit of them. They both treat people very nicely, like very nicely. Right. I think that's so good to hear. I think that purely the upbringing and the family background you guys have, a tough mindset as well, I think keeps you grounded all the times. And Kunal, I like that, you keep things very light, very humorous, at the same time keeping it fun. While Priyanshu also does the same, but is a lot more disciplined and very organized and all that stuff. Of course, because of the different kind of things you guys do and different professions you are into. But eventually, end of the day, you guys still, respect and discipline all comes together, as a part of the package. Lovely. Favorite items in the closet, Tanya? Mine. Oh, God. Too tough. I don't have like anything. इसके My बिना dresses mostly, जिसके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती. Favorite thing is my blush on. I can't survive. Like, I don't wear makeup, but on sunscreen only I'll apply blush on, so I can't survive without that. Then
I think so. My gym clothes, I really love them. Right. So I can't even survive without them. And then, uh, sari. Sorry. Oh, you love sorry. Okay. I, Nice. I love sari. So like that's the third favorite thing in my closet. Then the fourth thing is all those oversized shirts. Oh, you like wearing oversized shirts. Yeah, especially denim and oversized. I love oversized shirts. Okay. That's quite a lot of favorite items. Uh, Kunal, how about for you? What would मैं be your favorite? कपड़े बोलो, लोअर टी शर्ट ही एक, तो हम दोनों का तो जितना कंफर्टेबल उतना अच्छा. Acha. And Priyanshu, for you, I think you'll say the yes. नहीं, मेरे लिए बैगी क्लोथ्स बहुत Bag- पसंद है मुझे. Acha. So you and Tanya are और you like हम्म, wearing baggy, loose dresses, free flow, take it easy type. Nice. Okay. Um, जब डायलॉग्स का तो हमने कर लिया, बट तानिया आप एक डायलॉग बताओ जो ये दोनों रिपीट करें आपके लिए, एंड देन दे विल नेवर फॉरगेट. Which one do I want to repeat? I like my personal favorite is this one. Huh? Like I love this dialogue where I was sitting with my husband. I was like, आपको एक बात कहे, and when he asked क्या, हमें ना सोनाक्षी से ना बिल्कुल नहीं पसंद है. फिर उसके आगे ये हो रहा है कि ओके हमें ना अक्षय कुमार बहुत पसंद है. You guys will have to repeat it for me. Come on. बोलो चलो बता दे. Come on, Yes. Priyanshu. Go ऐसे ahead. टोन में बोलने का अपने में ना, तानिया दी वाले. So तानिया क्या दी बोलना बोलो. था? Guys, it's a simple हाँ line. क्या Like, बताओ आप ना, फिर से बताओ एक बार. कैसे बताओ, एक सिंपल लाइन बात बताओ. कहे आपसे. ठीक है, एक बात कहे आपसे, हमें ना हम्म, सोनाक्षी से ना बिल्कुल नहीं पसंद बस यहाँ पे रोक देते. है. ठीक है. एक बात कहे आपसे, हमें ना अरे सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल पसंद नहीं है. अक्षय वाला मेरा, अक्षय वेरी वाला नाइस, मेरा. लवली. कुणाल, गो. एक बात है आपसे, हमें ना सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल पसंद नहीं. Okay, why you're taking emotional, man? You're that's lovely, Kunal. You're too good at it, man. All right. I'm proud of you, Beyond, Kunal. you're amazing. You should definitely, accompany Tanya and probably get some start. Okay, so a few couple of questions towards the end. One secret habit beyond you guys do professionally, all right, which you guys love doing. मेरा So something डांस. which Priyanshu dance, all right. So you dance, Priyanshu? हाँ सर, बहुत ज्यादा. Acha? He's a wonderful dancer. Oh, really? So you like typical any type of dance या फिर Bollywood dance general? कुछ भी सर. Kuch bhi. Nice, good. And you have been dancing since early years. Yeah, You've yeah. been dancing since. Acha, nice. Okay, हाँ okay, बहुत good. जल्दी. Kunal, डांस हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, और पार्टी 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 और पार्टी शार्टी और घूमना सुनना बस. Gubna Shub. So you love long drives. अरे बहुत ज्यादा, इन लोग को तो ज्यादा ही घुमाता हूँ. And Tanya, how about you? What would be that one habit? I'm more spiritually inclined. So like I love that. I love doing that. Either I love meditating or I love chanting. So Okay. yeah, that's my secret habit. Okay. One last question. What will be your favorite family holiday destination where you guys will love to take a break, come together, three of you, with your parents and relax? Let's go to Maldives. मालदीव जा सकते हैं. Maldives. हम्म. Kunal? I think so Kunal Kunal, invited it. हाँ चलेगा, जा ये लोग बोलते. All right, lovely. So I think, guys, in the interest of time, I'll thank you again, you guys, for joining. Such a lovely, fun conversation we had, and getting to know more about Rajawat families. You guys are looking fantastic today.
keep smiling, and we will be tracking you guys, following you guys. Stay in touch, and all the best. Yes. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you. Tanya, you keep acting, doing well. We'll keep following you. Kunal, continue your Surely, party, sir. enjoy, have party sharty and all that. Okay, but let's all stay in touch. Let's. This is great fun for Yes, you sir. guys, knowing you guys. Cheers. Have a great day ahead. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you for having Thank you us. for inviting us. Smart Yes. person. Thank you. Bye. Okay. Bye.